Hello everyone, I am Anuja Shrivastava and today I am just going to carry forward the rest of the topic in class 7 physics, and the name of this chapter is electricity and magnetism. So in previous video I already taught you about the electric current and how the electric charges flow, and in this video I am just going to start with the new topic. The name of that topic is how electrons flow in a conductor. It is very important topic. What is the name of topic? Let us write how electrons flow in a conductor. That means how the flow of electrons takes place in a conductor. So just think about the tanks, water tank which kept at your terraces. You all have observed that tank. You have just sometime you have observed the two tanks are kept and they are joined with one pipe. Okay, suppose in first tank the level of water is here, okay, and in the second tank the level of water is here. So what will happen over here? That means the flow of water from higher region to the lower region. तब तक यहाँ तक होगा till the balance is not going to equalize. तब तक क्यों? जब तक ये दोनों में water level equalize नहीं हो जाएगा, then they are going to fill completely. So in the same way the flow of electron takes place. In the same way the flow of electron takes place, that means electrons flow in a conductor from one point to another point. That means how it flows from one point to another due to, what is the reason behind it? Due to potential difference. Okay, and this potential difference is also known as voltage. Okay, you all are knowing about the term voltage. That means what happens here between the 2 points, whatever the potential difference will be there through which the flow of electrons flows. Okay, now one more thing you must know, that higher the potential difference, what here? Higher the potential difference, I am writing in the short form, higher the potential difference, more will be the flow of electron. जितना ज़्यादा potential difference होगा उतना ही ज़्यादा electron flow होगा. And if we are going to discuss about the unit of the potential difference, so what is the unit of potential difference? The unit of potential difference is volt, which is defined as capital V. So this is the unit of potential difference. Okay, I hope you all understand whatever I had now taught you. Now let us start the another very important topic, and the name of this topic is electric cell. You all are knowing, you all are observing, and you all are using this electric cells. You are using the torch, you are using the remote, toys, everywhere these electric cells are utilized. So if we want to define the electric cell, that what is electric cell? So it is a device which convert, what it is going to convert, because inside it chemicals are there, so it convert chemical energy into electrical energy. That means what is the function of electric cell? It converts chemical energy into the electrical energy. Okay, so in simple way you can say the chemical which present inside the cell that occurring, that performs some reactions, and due to that reactions electric cell produce the electricity or electrical energy. That means simple way, जो केमिकल्स इनसाइड द सेल होते हैं वो केमिकल क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं इनसाइड द सेल. सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है. ओके, नाउ द
इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ प्रोड्यूस इनसाइड द इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होती है ना, दैट इज़ वेरी वेरी लेस, बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट, आप भी देखते हैं जब यू आर गोइंग टू ऑपरेट द टॉर्च यू आर यूजिंग 2 or 3 cells, okay, so that it can perform the proper way. So if we produce to want the large amount of electric current, so we have to use battery. What we have to use? We have to use battery. So some students are just thinking, what is the difference between the cell and the battery? Nothing, it is only that the battery is the combination of cell. What is battery? It is combination of cells. दैट मीन्स 2, 3, 4 सेल्स मिल करके बैटरी बनाते हैं, और जितनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उतनी ज़्यादा हम सेल्स को जोड़ करके बैटरी को बना सकते हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती हैं, इट इज़ ऑफ 2 टाइप. Cells is of 2 type. What are that 2 types? First is the primary cell and second is the secondary cell. Okay, now what is the difference between this primary cell and the secondary cell? Okay, so you are using the cell which in the remote after the completion of the cell, that means when the cell is stop working, you are just going to discard the cell. आप उस सेल को क्या करते हैं? फेंक देते हैं. That means वो सेल्स जो क्या करते हैं, जिनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं होती हैं, वो बार बार नहीं होती हैं और एक यूज़ के बाद वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं. दैट मीन्स प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, क्योंकि उनके अंदर की रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होती हैं और उनको हम यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर देते हैं. जबकि जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं ये रिचार्जेबल होती हैं. अब क्यों रिचार्जेबल होती हैं कंपेयर टू द प्राइमरी सेल्स? क्योंकि इनके अंदर की जो सेकेंडरी रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं? वो रिवर्सिबल होती हैं, वो बार बार रिएक्शन को करती हैं. इसी वजह से सेकेंडरी सेल्स को हम अगेन एंड अगेन रिचार्ज करके यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ अगर हम सेकेंडरी सेल की बात करते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेल, सो मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी सेल कंपोज्ड ऑफ निकल एंड कैडमियम. किसकी बनी होती हैं? मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ निकल एंड कैडमियम. ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू? प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनको आप यूज़ करने के बाद थ्रो आउट कर देते हैं बिकॉज वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती हैं. सेकेंडरी सेल को आप रिचार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट द ड्राई सेल. ओके, ड्राई सेल. सो ड्राई सेल की अगर हम बात करेंगे, तो ड्राई सेल इट मे बी प्राइमरी और इट मे बी सेकेंडरी. ड्राई सेल प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके की हो सकती है. अगर प्राइमरी होगी तो उसको एल्केलाइन बैटरी कहेंगे और सेकेंडरी होगी तो एज आई टोल्ड यू निकल एंड कैडमियम बैटरी. ओके, नाउ सेल्स जो होती हैं वो बहुत ईजी सोर्स होती है जिनसे हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, और जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. दैट आई टोल्ड यू, हायर द पोटेंशियल डिफरेंस हायर विल बी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हायर विल बी द इलेक्ट्रिसिटी विल बी देयर. ओके, now one more thing, keep it in your mind that primary cells are non rechargeable, but it used more than that of the secondary cell because the primary cell is cheaper. primary cell क्या होती है? बहुत cheap होती है, सस्ती होती है. that is why you are using that primary cell. okay, now अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ड्राई सेल्स जो होती है उसका जो नॉर्मल वोल्टेज होता है, इसका जो नॉर्मल वोल्टेज होता है दैट इज़ 1.5 वोल्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस इज नोन एज द ड्राई सेल. इसको ड्राई सेल हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इनसाइड द ड्राई सेल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट देयर. हियर अ moist paste of ammonium chloride used. Here moist paste of ammonium
chloride used. That is why it is known as a dry cell. Okay. Now, as I told you that it is known as a dry cell, but you cannot say that all the cells are dry. सभी cells क्या होती हैं, वो dry नहीं होती हैं. Some cells are also wet cells which you are using in the car and the other places. Okay. Now, if you are going to discuss about the diagram of the dry cell, so diagram is given in your book on the page number 110, where you are just observing the terminal. When you are just observing the cell, one metal point is there, metal cap is there, that use as a positive electrode, जो positive की तरह काम करता है, and the downside the zinc container is there, which is used as a negative electrode. Okay. That means the electric cell is very, very important, and you must know about the electric cell. So I hope you understood whatever I had taught to you. Now with the next topic I will meet with you in the next video. Till then, bye bye. Thank you.